गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट ए बी सी एंड डी बी पॉजिटिव रियल नंबर्स such that a less than b and c less than d, show that ac less than b। सोल्यूशन इसका गिवन हमारे पास क्या है बेटा, यहाँ पर गिवन है a लेस देन b एंड c लेस देन d एंड और क्या गिवन है ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, सी भी पॉजिटिव है, सी पॉजिटिव है एंड डी भी पॉजिटिव रियल नंबर्स। क्लियर? नाउ ए बी ए लेस देन बी एंड सी लेस देन बी। अगर हम ए सी एंड बी डी को मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी बी के साथ ए बी के साथ सी मल्टीप्लाई करेंगे एंड सी डी के साथ बी मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? तो ये बी सी कॉमन हो गया। हमारे पास ट्रांजिटिव लॉ क्या होता है? ट्रांजिटिव लॉ क्या होता है? अगर ए लेस देन बी है एंड बी लेस देन सी है, देन ए लेस देन सी है। यहाँ पर ए सी लेस देन बी सी है, बी सी लेस देन बी डी है, दिस इंप्लाइज ए सी लेस देन बी डी। यही हमने प्रूव करना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 2, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर such that a less than b, then prove that a less than a plus b minus a by n less than b, where n is a natural number greater than 1। इसका सॉल्यूशन, हाँ जी, हमारे पास गिवन क्या है? गिवन है ए बी रियल नंबर्स है, गिवन ए बी रियल नंबर्स है एंड ए लेस देन बी है। हाँ जी, नाउ ए लेस देन बी है, दिस इंप्लाइज बी माइनस ए क्या होगा? पॉजिटिव होगा। दोनों साइड्स पर हम n से डिवाइड कर देते हैं, b माइनस ए अपॉन n, a भी पॉजिटिव होगा। अब दोनों साइड्स पर हम a ऐड कर देते हैं, a प्लस b माइनस ए बाय n ग्रेटर देन a प्लस 0। दिस इंप्लाइज a लेस देन हो गया a प्लस b माइनस ए अपॉन n। क्लियर? इसको हम बाद में लेते हैं, इसको हम अगेन मल्टीप्लाई 1 by मल्टीप्लाई 1 by n माइनस 1। तो ये बन गया हमारे पास n माइनस 1 b माइनस ए ग्रेटर देन 0, n b माइनस ए minus of b minus a greater than 0, n b minus a greater than b minus of a, this implies b minus a greater than b minus a upon n। अब हम अगेन दोनों साइड्स पर क्या कर देते हैं? a ऐड कर देते हैं, a प्लस b माइनस a ग्रेटर देन a प्लस b माइनस a अपॉन n। तो ये a के साथ a कैंसिल होगी, दिस इंप्लाइज a प्लस b माइनस a अपॉन n लेस देन b। इसको नंबर 3 दे दो। कंबाइनिंग 2 and 3, combining
in 2 and 3, we get a less than a plus b minus a upon n less than b. This is our result. Now come to the next question. Question 3rd. Solve the following linear inequalities. First है minus 3x plus 6 less than equals to 0. We have to solve this equation. हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x पर पहुंचने के लिए दोनों साइड्स पर -6 करेंगे. 3x plus 6 minus 6 less than equals to 0 minus of 6. 6 के साथ 6 कैंसिल हो गया, तो ये minus 3x less than equals to -6. अब हम क्या करेंगे, माइनस को कैंसिल करेंगे. जब हम माइनस कैंसिल करेंगे तो क्या होगा, हमारी इनइक्वालिटी चेंज. माइनस कैंसिल कर रहे हैं तो 3x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6. तो अब 1/3 के साथ दोनों साइड्स पर डिवाइड मल्टीप्लाई. के साथ भी कैंसिल. x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, तो ये हमारा जो सॉल्यूशन सेट बनेगा 2 से इंफिनिटी. 2 पर क्लोज्ड, इंफिनिटी पर ओपन. कम टू द सेकंड है 2 into 2x plus 3 minus of 10 less than 6x minus of 2. अगेन हमें x को सॉल्व करना है. पहले हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं. 4x plus 6 minus 10 less than 6x minus of 12. 4x minus 4 less than 6x minus of 12. 6 को एक साइड पर कर देते हैं. 4x minus of 6x less than minus 12 plus 4 minus of 2x less than minus of 8. अब अगेन हम माइनस को कैंसिल करेंगे तो इनइक्वालिटी क्या होगी, चेंज. बोथ साइड्स पर 2 से डिवाइड किया, x ग्रेटर देन 4. तो हमारा सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, 4 से इंफिनिटी. नेक्स्ट कम टू द थर्ड. Six less than equals to -3 into 2x minus of 4 less than 12. तो ये बनेगा 6 less than equals to minus 6x plus 12 less than 12. 6 minus 12 less than equals to minus of 6x plus 12 minus 12 less than 12 minus of 12. minus 6 less than equals to 12 के साथ ये 12 कैंसिल. minus of 6x less than 0. अब क्या करेंगे, 6 को हम माइनस को कैंसिल करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज. 6 के साथ डिवाइड कर दो. 0 लेस देन x लेस देन इक्वल्स टू 1. तो हमारा सॉल्यूशन सेट बनेगा 0 पे ओपन, 1 पे क्लोज्ड. Okay, thank you. See you.